Hello, students. Welcome back in our civics lecture. Today, we are going to learn about chapter number 5 Woman Can Change the World. So, students, in the previous lesson, also we learn about the growing up as a boys and girl. So, in this chapter, you understand how some occupations are seen to be more suitable for men than women. In this chapter, Women Change the World, you will also know how women struggled for their equality. Means, in the previous chapter, students, you learn that how that societies and other peoples are discriminating the women's as well as the girl child, but in our constitution they given that freedom to us as a equality. So under that no one should any person discriminated as a their sex is a female. So, in this chapter, how that woman struggled for their equality and how that society were behaving with them, that we are going to learn. So, getting an education was and still is a way through which women can create new opportunities. This chapter will briefly trace the different types of efforts made by the women's movement to challenge discrimination in more recent years. Means students, what happened that women are getting the opportunities, but sometimes that opportunities are means on only papers. So which movements they struggled and how they challenge for the discrimination in the more recent years, that also we are going to learn in this chapter. Now first point is that fewer opportunities and their rigid expectations. There are many stereotypes that exist in society, such as girls, child, women, and are not capable of dealing with the technical things. Due to these stereotypes, many girls do not get the same support that boys get. मीन स्टूडेंट्स ऐसे माना जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वी टुक दैट, अगर हमने एग्ज़ाम्पल लिया कि अगर हम टीचर टीचर के रोल में अगर हमें किसी को चूज़ करना है, तो टीचर के रोल में मोस्टली हम क्या करते हैं कि फीमेल को ही चूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ वी टुक द फार्मर, सो इन द रोल ऑफ फार्मर obviously we will choose the male. Then if there is a factory worker, so in the factory worker also we are choosing only little bit numbers of the women's and most of numbers we are choosing for the men. As a nurse, in the nurse obviously we are giving the preference to the only female person because they are taking the care of that patient very kindly and gently. So if we think about the scientist, so what will be your opinion? As a scientist we are thinking that male are very technical persons and they can do that things very well. If we took the example of pilot, so as a pilot also only 3% we will discuss about the women's, but mostly we will give the preference for the male only. So why this inequality? Now you can say that nowadays that women are changed in many ways. Now stereotype means what? Stereotypes because that it is a many people believe in the stereotypes that girls do not get the same support that boys to do the study or train the as a doctors or as the इंजीनियर्स. मीन्स इन विच फील्ड जो हमारे पुराने सालों से परंपराएं चलती आ रही है, वैसे ही परंपरा वो ठुकराना या उसे काटना मतलब स्टेरोटाइप. सो स्टूडेंट्स,
A lot of people feel that women are fit only for the certain kinds of job as a nurse. They are not fit for the technical job. So students, in the previous point also I explain you about that अगर आपको नर्स चूज करनी है तो आपको क्या करेंगे आप कि लेडीज को ही चूज करेंगे, जेंट्स को नहीं. सो व्हाई दिस थिंग्स शुड बी देयर? Nowadays, in most families, women are taught that after school they have to get married. Lakshmi Lakra, however, broke this stereotype image when she became the first woman engine driver of the Northern Railway. Students, Lakshmi Lakra, she was from a poor tribal family in the Jharkhand and she has began to change the things, and she is the first woman engine driver for the Northern Railways. Her parents was not literate but they struggled and overcome many hardships to make sure their children got an education. उनके जो पेरेंट्स थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सारे तरह के क्या किए हुए थे, प्रयास किए हुए थे. एंड even means Lakshmi studied in the government school. Even in school Lakshmi did hard work and did well, then went on to get a diploma in electronics, and then she took the railway board exam and passed on the first attempt. Then what is the Lakshmi says to the all people? She says that I love challenges, and the moment somebody says it not for the girls, मतलब उसे ऐसी बातें बहुत पसंद है कि कोई जब बोलता है कि ये जो है ये फील्ड लड़कियों के लिए नहीं है. सो दीज चैलेंजेस शी वांट एंड आई मेक श्योर गो अहेड एंड डू इट. Also Lakshmi had said to do the several times in her life when she wanted to take electronics, when she rode motorcycle at the polytechnic, and when she decided to become an engine driver also. So students, that was the first change which that she broken the stereotype. When we live in a society full of pressures, if boys do not work hard and get a good salary, they are bullied. मतलब क्या किया जाता है कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे उस सोसाइटी में हमें बहुत सारा प्रेशर दिया जाता है. अगर वो बच्चा, वो जो बॉय है वो उसके काबिल भी नहीं है, फिर भी उसे ट्रेनिंग देकर, उसे एजुकेशन देकर उसे ट्रेन किया जाता है और उसे मोटिवेट किया जाता है. और अगर वो बच्चा है तो उसे नौकरी करनी ही है. उसे क्या कर अगर वो लड़का है तो उसे नौकरी मिलनी ही चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है, उसे अच्छी पगार नहीं मिलती है, तो समाज के द्वारा उसे प्रेशर किया जाता है, उसे चिढ़ाया जाता है, बुलीड कहाया जाता है. मीन्स दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ स्टेरियोटाइप और प्रेशर about the boys, means how they are discriminating the girls. So in the other hand they are pressuring the boys also, means this is they are not capable and dealing with the technical things. Now next point is that learning for a change. Now in this point we are going to learn that going to school is an important part of life. बच्चों, आपको तो पता है कि बिना पढ़ाई के आज के ज़माने में कोई भी चीज़ नहीं सो सकती है. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. Today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for the some children. मतलब ये जो सारी कंसेप्ट है कि स्कूल नहीं जाना, घर पर ही बैठकर सारे काम करना, घर के कामों की देखभाल करना, ये हमारे क्या है, आउट ऑफ बॉन्ड की सभी बातें हैं कि जो पुराने ज़माने में चलती थी. In the past, very few people learn reading and writing.
पुराने ज़माने में कुछ एक ही ऐसे उंगलियों पर जितने गिन सकते हैं उतने ही लोगों को लिखना और पढ़ना आता था। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर्स डिड। तो जैसे हमने पिछले लेसन में समोआ आइलैंड के स्टूडेंट्स देखे कि वहाँ के बच्चे अपने पारंपरिक जो व्यवसाय है जो अपने बड़े लोग सीखते हैं उनकी वही जो काम है वो क्या करते थे, सीखते थे। तो वैसे ही यहाँ पे होता था। इवन इन families where skills like a pottery, weaving and craft were taught, the contribution of daughters and women was seen as the secondary। मतलब सिर्फ घर के जो बड़े बच्चे हैं उनको ही नहीं तो बल्कि जो वहाँ की वुमेन्स है, वहाँ की जो छोटी बच्चियाँ हैं उनको भी ये सारे क्या काम किए किए जाते थे, सिखाए जाते थे। क्योंकि पुराने ज़माने में जो स्कूलिंग, जो एजुकेशन है, ये सारी जो बातें हैं वो इनके आउट ऑफ बॉन्ड थी। इफ़ यू आस्क टू योर ग्रैंड पेरेंट्स सो दे विल टेल दैट only little bit peoples were learning, and those are learning that peoples are getting the best job in that time, and those are not doing, they are doing the regular work. So in the 19th century new ideas about learning and education appeared, but there was a lot of opposition of educating girls ever then। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो गर्ल चाइल्ड है उनको पढ़ाने की शुरुआत उन्होंने की। आपको पता है कि इसके लिए महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन लोगों ने कितना कष्ट उठाया हुआ था कि जो महात्मा जी फुले हैं उन्होंने लड़कियों के लिए पहली स्कूल शुरू की हुई थी पुणे में, भिडेवाड़ा जो है, और वहाँ पे जो टीचर थी वो उनकी खुद की वाइफ सावित्रीबाई फुले, उनको पहले उन्होंने सिखाया हुआ था और बाद में वहाँ पे उनको जॉब दी। इन लोगों ने ये सारी बातें शुरू करने के लिए लोग अपोजिशन, इतना ही नहीं कि गोबर भी अपने पूरे शरीर पर उठाया हुआ था। जब वो वहाँ पे सिखाने के लिए जाती थी तो उनके ऊपर गोबर डाला जाता था। और जो महात्मा जी फुले हैं उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को उस ज़माने में क्या किया हुआ था, फेस किया हुआ था। In the 1890s, Ramabai championed the cause of women's education। 18th सेंचुरी में सबसे पहले जो एजुकेटेड वुमन थी वो रमाबाई थी। अब रमाबाई जी को सिखाने वाले जो थे वो कौन थे कि उनके खुद के पति वहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ था कि उनको सिखाया हुआ था। उनको एक टाइटल दिया गया हुआ था पंडिता रमाबाई, बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट अ संस्कृत अ रिमार्केबल। अब उनको ये डिग्री क्यों दी गई हुई थी कि वो बहुत अच्छे से पढ़। That Pandita Ramabai's achievement was very remarkable as women there were not allowed such a knowledge। मतलब उस ज़माने में किसी को भी पढ़ना लिखना बिल्कुल भी क्या था, उस पर बंदी थी। एंड शी वेंट ऑन टू सेट अप द मिशन इन द खेड़ेगांव नियर पुणे इन 1898। अब उन्होंने क्या किया कि खेड़ेगांव में एक मिशन उन्होंने शुरू किया वेयर विडोज एंड पुअर वुमन वेयर इनकरेज्ड नॉट ओनली टू बिकम अ लिटरेट टू बी अ इंडिपेंडेंट। तो ऐसी महिलाओं को, विडो महिलाओं को उन्होंने सिर्फ पढ़ाया ही नहीं लेकिन बल्कि इंडिपेंडेंट कैसे जीना है वो भी सिखाया। दे वेयर टॉट अ वैरायटी ऑफ स्किल्स फ्रॉम द कारपेंट्री टू रनिंग प्रिंटिंग प्रेस, स्किल्स दैट आर नॉट यूजुअली टॉट टू गर्ल्स इवन टुडे। मतलब आज के ज़माने में जो सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती है वो सारी चीज़ें उन्होंने क्या की हुई थी उस ज़माने में, रमाबाई ने उन्होंने ये सारी बातें सिखाई हुई थी। एंड रमाबाईज मिशन इज स्टिल एक्टिव टुडे। और उन्होंने जो मिशन स्टार्ट किया हुआ था वो आज भी क्या है, एक्टिव है। और जो गर्ल एजुकेशन है वो उसी वक्त से शुरू हुआ। रुकैया शुकावत हुसैन लर्न इंग्लिश फ्रॉम हर एल्डर ब्रदर। अब यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है रुकैया शेखावत का, कि जो अपने बड़े भाई से उसने क्या किया, इंग्लिश सीख लिया।
an elder sister in spite of family opposition and went on to become a famous writer. अब रुकैया सुखावत की जो स्टोरी है, रुकैया सुखावत was born into a rich family and who owned a lot of land. मतलब बड़े घराने की ये क्या थी, लेडी थी. एंड दो शी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट उर्दू, she was stopped from learning Bengal and English. In those days, English was seen as a language that would expose girls to new ideas which people thought were not correct for them. मतलब उस ज़माने में ऐसा समझा जाता था कि लड़की के लिए ये जो इंग्लिश है वो बिल्कुल भी सही नहीं है. बट रुकैया लर्न टू रीड एंड राइट Bangla and English with the support of her elder brother and elder sister, as well as she went on to become a writer. She wrote remarkable stories titled as Sultana's Dream in the 1905 and practiced her English skill when she was merely 25 year old. मतलब बहुत कम समय में, अपनी उम्र की छोटे साल में ही उसने क्या किया हुआ था, ऐसी सारी चीज़ें की हुई थी. This story imagine a woman called Sultana who reaches a place called the Lady Land. As you can see, Ruqayya Sukhawat Hussain was dreaming of women flying planes and cars even before girls were being allowed to go to school. मतलब जिस ज़माने में लड़कियों को स्कूल जाने के लिए परमिशन नहीं थी, उस ज़माने में रुकैया ऐसा सोच रही थी कि इन लड़कियों को प्लेन फ्लाइंग करने के लिए मिलने चाहिए. एंड दिस वॉज द वे विच एजुकेशन एंड लर्निंग हैड चेंज रुकैयाज ओन लाइफ. और उसकी वजह से उसकी खुद की लाइफ क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी. हियर वी विल टेक द अनदर एग्जाम्पल ऑफ राजसुंदरी देवी ऑफ बंगाल. वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड अमर जीबान. अब ये जो राजसुंदरी देवी है, उनको आदत थी या उनको एक उनकी हैबिट थी कि पढ़ना. तो जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने क्या किया हुआ था कि चुपके से एक जो चैतन्य भागवत का नाम का जो ग्रंथ था वो वहाँ पे रखा हुआ था. तो वो पढ़ने के लिए उन्होंने शुरू किया हुआ था. उन्होंने क्या किया कि अल्फ़ाबेट्स जो है वो अपने खुद के खुद सीख ले. और बाद में उन्होंने क्या किया, आफ्टर लर्निंग इन द अल्फ़ाबेट राजसुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड द चैतन्य भगत थ्रू हर ओन राइटिंग. शी ऑल्सो गेव द वर्ल्ड an opportunity to read about women's lives in those days. And Rajsundari Devi wrote about her everyday life experiences in details. There were days when she did not have moments, rest, no time even to sit down and eat. तो उस ज़माने में उन्होंने क्या किया कि अपनी हर रोज़ की जो ज़िंदगी थी उसके बारे में उन्होंने हर रोज़ लिखना शुरू किया. और वही जो उनका लिखी हुई सारी बातें थी वो एज ऑटोबायोग्राफी क्या हुआ, यहाँ पर published हुआ. Unlike Rajsundari Devi and Ruqayya Hussain, who were not allowed to learn to read and write, large number of girls attend school in India today. Despite this, there continue to make girls who leave the school for reasons of poverty, inadequate schooling facilities, and discrimination. Providing equal schooling facilities to children from the communities and the class backgrounds and particularly girls continues to be a challenge in India. मतलब स्टूडेंट्स, ये जो सारी महिलाएं हैं उन्होंने जो ये मूवमेंट्स किए हुए थे उनकी वजह से आज जो गर्ल्स एजुकेशन मिल रहा है उसे हमें बहुत धन्यवाद कहना चाहिए. सो स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, आज के ज़माने की जो स्कूलिंग है और आज का जो एजुकेशन है, अबाउट दैट वी विल लर्न. टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड द स्कूल इन लार्ज नंबर. आज के ज़माने में ये जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं उनको एक समान अधिकार है कि हम क्या कर सकते हैं कि पढ़ लिख सकते हैं. Actually nowadays that peoples, their parents are means thinking about that my daughter also should get the all the facilities or all the good things like my son. So the difference in their education still remains. अब
ये सभी जगह पे नहीं हो रहा है. इन सम मीन्स प्लेसेस it is we can see the difference between the girl child education and boys education. So today education is the right of both boys and girls. Despite that, only 50% of the girls receive an education. फिर भी इतना सारा होकर जो 50% गर्ल है उनको ही क्या कर रहा है कि एजुकेशन मिल रहा है. Means which are the tribal peoples, tribal societies, in that still that peoples are not ready to give that education to our daughters, or those are the thinking like ancient, that peoples also thinking that what they will do by learning all the things. After all, they have to marry and they have to see towards their children only. सो इंडिया हैज़ अ सेंसस एवरी 10 years. इंडिया में हर 10 साल के बाद जनगणना की जाती है. सेंसस मतलब जनगणना, विच काउंट्स द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. दिस इंफॉर्मेशन यूज टू मेजर थिंग्स लाइक लिटरेसी, सेक्स रेशियो, कौन कितना पढ़ा लिखा है, ये जो सारी बातें हैं वो किस में से हमें पता चलती है कि जो सेंसस होता है उसमें से ये सारी बातें हमें पता चलती है. A huge number of SC and ST children leave school at early age. The 2014 the 2040 census even shows that Muslim girls are less likely than Dalit girls to complete primary school. अब इसमें पाया गया कि जो ट्राइब्स है SC एंड ST मीन्स दोज पीपल्स आर इन द ट्राइब्स दे गिवन दैट कैटेगरी. इनमें क्या किया जाता है कि बहुत छोटे होते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन भी उनका कंप्लीट नहीं होता है. लेकिन अगर कंपेयर किया मुस्लिम लोगों से तो दलित लोगों से ज़्यादा मुस्लिम लोग जो है उनकी लड़कियों ने क्या नहीं किया हुआ था, सीखा नहीं हुआ था. According to the different religion, they are treating their girl child in the different way. Always that Muslim girls are in the burqas. आपको तो पता है कि मुस्लिम लोग जो है उनकी लड़कियां हमेशा बुरखा में होती है. तो मे बी दिस इज द रीजन दे आर नॉट सेंडिंग देयर गर्ल चाइल्ड और डॉटर टू आउटसाइड फॉर completing their primary education also. But this is very serious condition. And that Dalit girls also, those peoples are means from the lower caste, that is called the Dalit. So that peoples also, they are not thinking very higher about their daughters learning. So that girls also we caught in the 2040, they did not completed their primary education also. So many reason like non-availability of teachers and schools, lack of transports, cost of education, indifferent attitude of teachers and parents are responsible for the negligence of the education. मतलब बहुत सारे ऐसे रीजन्स की वजह से कभी कभी इन लड़कियों को क्या नहीं मिलता कि प्रॉपर जो एजुकेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है. Now, women's movement. Which movement happened in that time? Women have individually and collectively struggled to bring about changes. This is called the women's movement. अब वुमेंस ने क्या किया हुआ था कि अपने जो अधिकार है वो अधिकार मिलने के लिए उन्होंने एकजुट बनाई हुई थी और इस एकजुट के साथ उन्होंने बहुत सारे चेंजेस जो है वो करवाए हुए थे. सो दैट थिंग्स दैट इज कॉल्ड द वुमेन्स मूवमेंट. सो विच वुमेन्स मूवमेंट हैपन that here they given they have struggled to bring out as their independent. Different strategies have been used to spread awareness, fight discrimination and seek justice. अब इन लोगों ने क्या किया कि ये जो स्ट्रगल है वुमन का वो मूवमेंट के नाम से जाना गया. इंडिविजुअल वुमन एंड वुमेन्स organization from the different parts, they did all that work.
So, these movements are related to campaigning, raising awareness, protesting, and showing solidarity. Men and women in society are looked upon as a playing specific gender roles. अब उन्होंने क्या किया कि ये जो मूवमेंट्स हैं, तो इन मूवमेंट के बारे में उन लोगों में ये सारी जानकारी फैलने के लिए, अवेयरनेस फैलने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हुई थी. Then also women have been facing inequalities at every steps since a time immemorial. No doubt their position and their status have been improved with the change of time. Still they lag behind the men in almost every field. In this male dominated society, they fail to avail equal privileges and opportunities. मतलब आज भी ज़माने में ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो वुमेंस की मूवमेंट है, तो उस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ था कि ये सारी बातें जो है वो बदल चुकी थी. So I hope students you understood that lesson very well, and also you learn about that really women are important for our society. Without women we can't think for a second. Means how that oxygen or water is very important for us. Like this that women are also very important and really they can change the world. Thank you. Happy learning.